Hello everyone, welcome all to Physics with Astronautics. So in this video we'll discuss about the previous year question of the cpet and the paper will be physics. Okay, so let's begin. And the potential energy of an one-dimensional harmonic oscillator is equal to V1 when the displacement from the equilibrium position is x1. तो हमारे पास क्या है, एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है कितना V1 पर कब, जब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है from the equilibrium position is x1 and the potential energy become V2 when its distance from the equilibrium position is x2. When its displacement from the equilibrium position is x1 plus x2, the potential energy is, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा x1 प्लस x2 तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना होगी। तो हमारे पास जो गिवन है वो है, एक है v1 when the displacement is x1, then v2 when the displacement is x2, and we know that vx, that is the potential energy, is equal to half k x square. Here x is the distance or displacement from the equilibrium position and vx is the potential energy and in the form of distance. Okay, so for V1 we can write it as half k x1 square, and for V2 we can write it as half k x2 square. And here the question is when the displacement is x1 plus x2. So in place of x, if we will put x1 plus x2, then the equation will become v of x will be equal to 1 by 2 k x1 plus x2 whole square is equal to half k x1 square plus half k x2 square plus k x1 plus x2. Okay, and so we can write it as half k x1 square we know v1, half k x2 square we know v2, and k x1 plus x2 will be equal to 2 root v1 v2. Okay, so here the right answer is v1 plus v2 plus 2 root v1 v2, that is option D. And then the next question we have the boundary condition for the electric displacement D and the electric field E at the interface of two homogeneous isotropic linear dielectric medium are. And here are the options you can see. So for the electric displacement D, we can write integration over d dot dA equals q free charge. Okay, and so here this can be written as d1n minus d2n equals sigma f. So here d1n represents the normal component of d just inside the medium 1, and d2n is the normal component of d just inside the medium 2. Okay, and sigma f is nothing but the free surface charge density at the interface. So for the electric field E, we can write it as E dot dl equals 0. Okay, and that's why E1t E will be equal to E2t, because we can write it as del cross E. Okay, so E1t is the tangential component of E in medium 1 and E2t is the tangential component of E in medium 2. So from these two equations we can see here that the tangential component of electric field and the normal component of displacement should be continuous. Okay, so the option B is the right answer here. Then, and here we'll have the next question, that is if A and B are the Einstein coefficient for the spontaneous and stimulated transition respectively, which of the following corresponds to spontaneous emission of photon। तो हमारे पास जो है दो टाइप ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक हो रहा है स्पॉन्टेनियस एंड द अदर वन इज स्टिमुलेटेड। ओके, सो ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पॉन्टेनियस एंड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलेटेड, एंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, तो हम यहाँ पे ही बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी एंड डी विल नेग्लेक्ट एंड फ्रॉम ए एंड बी वी विल डिसाइड कि व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, so if A and B are the Einstein coefficient for the spontaneous and the stimulated transition respectively, that already has been given in the question, and
A12 and A21 corresponding to the spontaneous transition, and B12 and B21 are the stimulated transition. Okay, so from 2 to 1 the transition is happen if, then A to 1 will be the emission. If 1 to 2 is transition happen, then this will be absorption, and that's why here A to 1 will be the spontaneous emission and option B will be the correct answer. Okay, then in Bose-Einstein distribution a given state can be occupied by, तो जब भी हम बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स, हम वहाँ पे कैसे रख सकते हैं हमारे पास जो भी पार्टिकल्स है. ओके, so the option A says only one particle, B only two particles, option C n number of particles, option D a definite number of particles which is equal to the number of degrees of freedom of each particle. तो पहले हमें ये जानना है कि बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस पार्टिकल के बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली वी विल डिस्कस हियर अबाउट द बोसॉन्स, एंड यू नो बोसॉन्स आर आइडेंटिकल, और हम यहाँ पे कितने भी नंबर के पार्टिकल रख सकते हैं. ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर्मियंस में होता है कि एक स्टेट में बस एक ही पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होती. देन फॉर्मिटिरैक में हम बात करते हैं फॉर्मियंस की, जहाँ पे कि हमारे पास बस एक स्टेट में एक ही पार्टिकल रहती है. देन अगेन वी हैव क्लासिकल पार्टिकल्स, एंड दिस कैन बी done with the Maxwell-Boltzmann distribution. Okay, and here we can put any number of particle, but that should be distinguishable. Okay, I hope you understand this part. Then the non-existence of electron inside the atomic nucleus can be ascertained by using. Okay, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता. The option are Heisenberg uncertainty principle, Bohr's theory of hydrogen atom, Rutherford's alpha particle scattering experiment, the liquid drop model of the nucleus. Okay, तो हमारे पास बेसिकली चार ऑप्शंस है और हमें पता करने हैं कि हमें ऐसी कौन सी थ्योरी है जो बता रही है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता. So basically this is the Heisenberg uncertainty principle is the right answer here. Okay, so how if the electron exists inside the nucleus, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, that means that particle should be of the size of the nuclear size. Okay, that is delta x should be equal to the nuclear size, and we know that the nuclear size is of the order of Fermi meter, that is 10 to the power minus 15 meter, and so the momentum here would be very large. Okay, because of Heisenberg uncertainty principle, that is delta x dot delta p is greater than equals h bar by 2. But if delta p would be very large, so that kinetic energy would be very large, and which will be far larger than the binding energy inside the nucleus. Okay, तो अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बाइंडिंग एनर्जी इनसाइड द न्यूक्लियस, देन इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, जो कि कोई सेंस बता ही नहीं रहा है. एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डजंट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, और हमें ये पता चलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू. ओके, सो योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देन a closely wound solenoid of n number of wire carrying a current I is placed in air. The length of the solenoid is capital L and its diameter is very small in comparison with its length. The magnitude of magnetic induction inside the solenoid at its center is. तो हमें बेसिकली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पे क्या है वो हमें निकालनी है, और यहाँ पे किसका यूज करा गया है, सोलेनॉइड. ओके, तो हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ वायर है. ओके, मतलब उसका जो टर्न है वो n नंबर है. हमारे पास I है, उसका जो करंट जो फ्लो हो रहा है, और जो लेंथ है उसका वो है कैपिटल L. अगेन द डायमीटर हियर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ, and we know that magnetic field at the center is equal to mu naught Ni, and here small n is equal to capital N by L, and that's why B will be equal to mu naught Ni by L, which is equal to option C. So here option C is the right answer.
Then the next question. A gas is in thermal equilibrium at absolute temperature capital T and the gas molecule obey Maxwell-Boltzmann velocity distribution. तो हमारे पास क्या है, एक गैस है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे प्रेजेंट है and the gas molecule obey Maxwell-Boltzmann velocity distribution. Okay. Then if C1, C2 and C3 are the RMS speed, the mean speed and the most probable speed of the molecules respectively, then C1 is to C2 is to C3 is. तो हमें क्या दिया गया है, हमारे पास एक गैस है जो कि थर्मल टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे है और वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे कर रहा है और हमारे पास उसका आरएमएस वेलोसिटी है, मीन स्पीड है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और हमें क्या निकालनी है, इन तीनों के बीच का रेशियो क्या होगी। तो हमें पता है कि आरएमएस स्पीड जो होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ 3 kT/m, जो मीन स्पीड होता है वो होता है 8 kT/m रूट ओवर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो होती है root over of 2 kT/m. Here this should be C3. Okay. And that's why C1 is to C2 is to C3 will be equal to root 3 is to 8 by pi root is to root 2. And this is equal to the option B. So here option B is the right answer. Then the Laplace transformation of sin AT with A is greater than 0 is. तो जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसका जो फॉर्म होता है वो होता है बेसिकली एल एफ टी इक्वल्स इंटीग्रेशन ओवर 0 to infinity e to the power minus एस टी एफ ऑफ टी डी टी और हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है वो फंक्शन क्या गिवन है, साइन ए टी। ओके, एंड दैट्स व्हाई Laplace transformation of f of t will be equal to integration over 0 to infinity e to the power minus st sin a t dt. And this is a standard form and the answer will be here a by a square plus a square and which is equal to option B. Okay, then 59. The wave function of an one dimensional harmonic oscillator. तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो वेव फंक्शन होता है उसका डायमेंशन क्या होगा इन 1D। ओके, वो हमें निकालनी है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी which is equal to integration over minus infinity to infinity psi x square dx is equal to 1. Okay, and so from here we can see that the dimension is psi x square and dx has the dimension n and is equal to 1. Okay, and from here we can get that psi x will be equal to 1 by root n, that is equal to L to the power minus 0.5, and so here the dimension will be L to the power minus 0.15, which is option D. Then which of the following are the universal waves? And the options are or, and, nor, and, or, not. And here the option C, nor, and is the correct answer. I hope you all enjoyed this session. For more videos, please do like, share and subscribe. Thank you.